Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, Mr. President, may I kindly request your permission to commence the proceeding of the oath-taking ceremony? Thank you, sir. I now invite Qari Ehsanullah Kakad to recite verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुसलमानों, यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हक़दारों तक पहुँचाओ और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। यकीन जानो अल्लाह तुमको जिस बात की नसीहत करता है वो बहुत अच्छी है। बेशक अल्लाह हर बात को सुनता और हर चीज़ को देखता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. I shall now read the official notification of the appointment. In exercise of the powers conferred under Clause 1 of Article 193 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar as Chief Justice of the Islamabad High Court, Islamabad, with effect from the date he makes oath of his office. Your Excellency, Mr. President, may I request you to administer the oath of office to Mr. Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar as the Chief Justice of the Islamabad High Court. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I, Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Islamabad High Court, that as Chief Justice of the Islamabad High Court, I will discharge my duties and perform my functions honestly. I will discharge my duties and perform my functions honestly, To the best of my ability and faithfully. to the best of my ability and faithfully, In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, That I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will not allow any professional interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect, defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, effective or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. and that in all circumstances I will do right to all manners of the people according to law, without fear or favor, affection or ill will.
May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Subhan. Thank you. ऐवान सदर इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बरदारी। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बरदारी इस वक्त आप देख रहे हैं। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया है। तकरीब हलफ बरदारी में वफाकी वज़रा, सीनियर वकला बड़ी तादाद में शरीक हैं और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इस तकरीब हलफ बरदारी में यहाँ पर शरीक हैं। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हलफ लिया है।